हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सीपेट एजुकेशन जो 2021 मसीह जो क्वेश्चन होता तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 एग्जाम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा विथ एक्सप्लानेशन। तेणु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छे से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सांग पाखु सेयार कर। चलो ताले भिडियोटी स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन होची कौन ना, व्हिच वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी गिव्स एम्फासिस ऑन सेंसरी ट्रेनिंग। ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी नेचुरलिज्म, ऑप्शन सी pragmatism and option D existentialism. Here the correct answer is option A, that is idealism. तार एक्सप्लानेसन देइछि, पिला माने एक्सप्लानेसन भल भाव पढ़ी दिबो। तादर मध्ये आहुरी क्वेश्चन तमन पई एते इजी हबो जे नेक्स्ट एग्जाम पई तमन पई बहुत इजी हबो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स universe has been created by men. Option A idealism, option B naturalism, option C pragmatism and option D existentialism. Here the correct answer is option D, that is existentialism. Then the next question is who is the founder of Sankhya philosophy. तो मनकर एता पढ़ाई थी कॉलेज रे क्लास रे पढ़ाई थी। who is the founder of Sankhya philosophy. Option A Kannada, option B Kapila, option C Patanjali and option D Gautam Buddha. Here the correct answer is option B, that is Kapila. Kapila is the founder of Sankhya philosophy. Then the next question is which was not a feature of basic education as of Gandhiji. Option A teaching through mother tongue. Option B emphasis on science and technology for progress of country. Option C community living and a teacher as a role model. And option D rising of non-violent men and a non-violent society. Here the correct answer is option D, that is rising of non-violent men and non-violent society. Then the next question is which branch of philosophy deals with value system. Option A metaphysics, option B epistemology, option C axiology and option D ethics. Here the correct answer is option C axiology. एपिस्टेमोलॉजी इनवॉल्व्स नॉलेज, मेटाफिजिक्स होची रियलिटी एंड एक्चुअलिटी होची वैल्यू। यहाँ मन रखिथिबो जे प्रति परीक्षा सब वर्ष परीक्षा रे गोटे क्वेश्चन आसुची। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग चाइल्ड इज प्राइमरली कॉज्ड बाय हेरेडिटी. ऑप्शन बी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. तमाने इंडिविजुअल डिफरेंस जो फैक्टर्स पढ़ी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हूँ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डिस्क्राइब्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज एज रिलेटेड डेवलपमेंट. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज रिलेटेड डेवलपमेंट बोली किए डिस्क्राइब करते. ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी डेविड एस्ट्रूबेल एंड ऑप्शन डी थॉर्नडाइक. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जीन पियाजे. Then the next question is as per hierarchical learning theory which type of learning comes before rule learning. Option A signal learning, option B multiple discrimination, option C concept learning and option D problem solving. Here the correct answer is option C, that is concept learning. Then the next question is who is the father of experimental psychology. Option A Terman, option B Binet, option B Hall and option D Undont. Here the correct answer is Undont. Undont होचोंदे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. कारण से प्रथमे साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी ही प्रथमे लिप्जिग ठारे प्रतिष्ठा करथिले एवं सी होचोंदे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. तापर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंसी एज पर पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ऑप्शन ए द एबिलिटी टू रीच आउट एंड ग्रैब एन ऑब्जेक्ट. Option B the ability to name an object. Option C the ability to know that not seeing an object does not mean it does not exist. And option D the ability to know that the object has a specific function in the environment. Here the correct answer is option C. Option C, that is the ability to know that not seeing an object does not mean it does not exist. माने गोटे जिनस ये परमानेंसी कहले कौन ना जे गोटे जिनस तो आखि सामने नहीं माने से पिला भाव जे से जिनस नहीं बोलिकी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल फिजिकल ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टुवर्ड्स फुट इज कॉल्ड concentration, cephalocaudal, proximodistal and continuity.
डेभलपमेंट होची दी प्रकार गोटे होची हेड टू टेल आड़ को आसी थाए हेड रु टेल आड़ को आसी थाए बा फुट आड़ को आसी थाए देन आ गोटे होची सेंटर रु पेरिफेरी आड़ को आसी थाए तेणु हियर दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज सेफालोकाउडल ल जेतेबेले फुट हेड रु फुट आड़ को आसे हेड रु फुट आड़ को जेतेबेले आसे ताको कह जाय सेफालोकाउडल जेतेबेले सेंटर रु पेरिफेरी आड़ को आसे सेतेबेले कह जाय प्रॉक्सिमो डिस्टल याको पिला माने मन रखिथिबो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड अपन व्हिच थ्योरीज ऑफ लर्निंग एटा सब बळे आसुची मध्ये क्वेश्चन तमनकर सिपेटर आसुची तेणु ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन सी इनसाइटफुल लर्निंग एंड ऑप्शन डी सोशल लर्निंग हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग ऑप्शन ए प्रिपरेशन इंक्यूबेशन इनोवेशन एंड वेरिफिकेशन ऑप्शन बी प्रिपरेशन इल्यूमिनेशन इंक्यूबेशन एंड वेरिफिकेशन ऑप्शन सी इंक्यूबेशन वेरिफिकेशन प्रिपरेशन एंड इल्यूमिनेशन एंड ऑप्शन डी इल्यूमिनेशन प्रिपरेशन इंक्यूबेशन एंड वेरिफिकेशन हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज प्रिपरेशन इंक्यूबेशन इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन एथुरु सबु परीक्षा रे गोटे क्वेश्चन आसुची सबु वर्ष मध्य क्वेश्चन एथुरु गोटे आसुची याको भलो भाबरे मन रखिथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इज व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट ऑप्शन ए इंडिविजुअल वर्बल ऑप्शन बी वर्बल ग्रुप वर्बल ऑप्शन सी इंडिविजुअल नॉन वर्बल एंड ग्रुप ऑप्शन डी ग्रुप नॉन वर्बल हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज ग्रुप नॉन वर्बल देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज इफेक्टिव which type of a conditioning is effective forward option b backward option c delayed and option c trace here the correct answer is option a that is forward conditioning is effective then the next question is when a stimulus no longer evokes conditioned response is known as option a generalization option b discrimination option c extinction and option d chaining here the correct answer is option C extinction then the next question is my brother is an IAS IAS officer is example of which type of defense mechanism option A sublimation option B projection option B C rationalization and option D identification here the correct answer is identification option D that is identification then the next question is who is the father of educational sociology option A Auguste Comte option B George Piano and option C Talcott Parsons and option D Durkheim here the correct option is ऑप्शन डी दैट इज दरखाम होचंदी एजुकेशनल सोशियोलॉजी रो फादर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑप्शन ए मोबिलिटी ऑप्शन बी रिलीजियस बिलीफ ऑप्शन सी साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ऑप्शन डी पार्टिसिपेशन हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज रिलीजियस बिलीफ देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 caste system can create a closed society, a changing society, a dead society and an open society. Here the correct answer is option A that is closed society. Then the next question is which is an example of a supply type test option A multiple choice option B matching option C classification and option D completion. Here the correct answer is option D that is completion type जो थी कि डैशबोर्ड था जहाँ को सप्लाई करने ही पिला को पड़ी था नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी इज लिस्ट प्रिसाइजली क्वांटिफिएबल ऑप्शन ए कंटेंट वैलिडिटी ऑप्शन बी कॉन्करेंट वैलिडिटी ऑप्शन सी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड ऑप्शन डी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी Here the correct answer is option D that is predictive validity. The next question is comparing a known unit with a unknown unit is called
Option A test, option B measurement, option C evaluation, and option D discrimination. Here the correct answer is option B, that is measurement. गोटे unknown जिनस को गोटे comparing a known unit with a unknown unit is called measurement. Then the next question is, if a test measures master level achievement in a subject, it is known as A. Criterion reference test, B. Diagnostic test, option C. Norm reference test, and option D. Placement test. Here the correct answer is option A, that is criterion reference test. Then the next question is, Likkert's method is used to prepare option A achievement test, option B ability test, option C attitude test, and option D aptitude test. Here the correct answer is option C, that is attitude test. Then the next question is, differentiate growth from development. This question measures which cognitive objectives? Knowledge, understanding, application, and analysis. Here the correct answer is option B, that is understanding. माने ग्रोथ एवं डेवलपमेंट जो डिफरेन्स पार्थक्य निर्णय कर से अंडरस्टैंडिंग कम्प्रिहेंशन लेवल ही कार्य कर. नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हिच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी? ऑप्शन ए स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी इक्विवेलेंस, ऑप्शन सी डिफ्यूसिवनेस, एंड ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, diffusiveness. Then the next question is, which is true about relation between reliability and validity? Option A, a valid test will be always reliable. Option B, a reliable test will be always valid. Option C, reliability and validity are not related. And option D, both A and B. Here the correct answer is option A, that is a valid test will be always reliable. But a valid test सबले reliable ही होता है. Then the next question is, if 5 is added to every score in a given distribution whose standard deviation is 3, then the new standard deviation will be option A 5, option B 8, option C 3, and option D 2. Here the correct answer is option C, that is 3. किछि चेंज हबो नाही. Then the next question is, the range of coefficient of correlation between two variables is option A 0 to 1, option B plus 1 to minus 1, option C 0 to minus 1, option D none. Here the correct answer is option B, that is plus 1 to minus 1. जेतले प्लस 1 आसीबो आमर कोरिलेशन सेतले कुआ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जेतले माइनस 1 आसीबो सेतले कुआ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. Then the next question is, which is the appropriate measure of central tendency when the scores are given in a nominal scale? Option A mean, option B median, option C mode, and option D harmonic mean. Here the correct answer is option C, that is mode. Then the next question is, if maximum students get 80% or above marks, then the shape of the distribution will be positively skewed, negatively skewed, plateautic, or normal. Here the correct answer is option A, that is positively skewed. Then the next question is, the most stable measure of variability is range, mean deviation, standard deviation, and quartile deviation. जेमती स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन, सेमती द स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ये ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीडियन इज ऑल्सो नोन एज 5%, ऑप्शन बी 50th percentile, ऑप्शन सी सेकेंड क्वार्टाइल, एंड डी 5th decile. Here the correct answer is option C, that is सेकेंड क्वार्टाइल. सेकेंड क्वार्टाइल गले आमर जो गोटे स्केल डिस्टेंस रे रही है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, एंड थर्ड क्वार्टाइल. एक 0 टू एपटे है फास्ट, एठू एपर्यंत सेकेंड, एठू एपर्यंत थर्ड, एठू एपर्यंत फोर्थ. तेणु सेकेंड क्वार्टाइल जोटा सेटा होची मिडिल पॉइंट, जहाँ कोई मीडियन बोली कहा जाए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is positional average? Option A mean, option B median, option C mode, and option D none of the above.
हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोजिशन मीडियन इज ए पोजिशन जहाँकि समग्र वितरण को समान दुई भाग में विभक्त करता है। यह हूँ गोटे पोजिशन तार तले 50% केसेस था और ऊपर को 50% केसेस रही था। तेणु हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज मीडियन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल यूनिमोडल बेल शेप्ड एंड all of the above. Here the correct answer is that is all of the above कारण NPC बा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हूँ सिमेट्रिकल यूनिमोडल बेल शेप्ड तेणु तार क्यारेक्टरिस्टिक्स सब जाक ही आसूँ तेणु ऑल ऑफ द अबव हम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टूल इज एप्रोप्रिएट टू असेस वन्स इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर फेनोमेनन। ऑप्शन ए क्वेश्चनर, ऑप्शन बी स्केल, ऑप्शन सी टेस्ट एंड ऑप्शन डी इन्वेंटरी। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज इन्वेंटरी। Then the next question is if a teacher does a research to solve an indiscipline problem in his or her classroom, it is which type of a research? Option A fundamental, option B applied, option C action and option D basic. Here the correct answer is option C that is action research. Then the next question is the intelligence of boys will be same as girls is an example of which type of hypothesis? Option A research hypothesis, B directional, C non-directional and D null hypothesis. Here the correct answer is option A that is research hypothesis. Then the next question is which is not a probability sampling technique? Cluster sampling, quota sampling, systematic sampling and simple random sampling. Here the correct answer is option B that is quota sampling. Then the next question is if you want to do a research on contribution of Gopamandas to the field of education, the appropriate research method is survey, experimental, historical and case study. Here the correct answer is option D that is case study. गोटे case study हिसाब से जनकर लाइफ हिस्ट्री नहीं रिसर्च करा जाई पारिबो। Then the next question is which is the right sequence of doing research? Identifying problem, review of literature, conclusion, data collection, analyze data. तेणु पे आमर जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च रही एजुकेशनल रिसर्च तार सब स्टेप जहाँ कि रही से अनुसार ही यहाँ करा जाई परिबो। ये जो ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हेनी यहाँ ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। ये बाउल ऑप्शन डी हो जाए तेणु यहाँ हम ऑप्शन बी दैट इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड कंक्लूजन। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन योर क्लासरूम। दिस इज स्टेटेड इन National Education Commission 1964-66, National Policy on Education 1986, National Knowledge Commission 2005 and option D is University Education Commission 1948-49. Here the correct answer is option A that is National Education Commission by Indian Education Commission 1964-66. The next question is Pavaja is related with which period of education? Vedic, Buddhist, Muslim and post-Vedic. Here the correct answer is option B that is Buddhist. Pavaja ceremony Buddhist education ही करा जाए। Next question is Calcutta, Madras and Bombay universities were established in India by the recommendation of which commission act? Calcutta University Education Commission, Indian Education Commission, Woods Dispatch and Charters Act. Here the correct answer is option C that is Woods Dispatch. Woods Dispatch के भेजले ना 1854 1854. Then the next question is establishment of Navodaya schools was the recommendation of Secondary Education Commission, University Education Commission, Kothari Commission and National Policy on Education 1986. Here the correct answer is option D that is NP 1986. Then the next question is in which type of a curriculum every students gain similar curricular experience? Subject centered, learner centered, experience centered and core curriculum. Here the correct answer is option D that is core curriculum. Then the next question is which is not a principle of a curriculum construction? Flexibility, rigidity, integration and totality. Here the correct answer is option D that is totality.
Then the next question is, which is not related with the TABA model of curriculum of development? Option A, Board of Secondary Education will construct curriculum. Option B, classroom teachers will participate in curriculum. Option C, known as a grassroots level curriculum. And option D, follow inductive approach. Here the correct answer is option A, that is Board of Secondary Education will construct curriculum. Then next question is, which is not a component of a curricular design? Option A, learning objectives. Option B, textbook. Option C, content. And option D, evaluation. Here the correct answer is option B, that is textbook. Then the next question is, the children with disabilities studying along with normal children in a least restrictive environment program assisted by a research teacher is known as special school program, integrated education program, inclusive education program, and option D, none of the above. Here the correct answer is option A, inclusive education program. That is children with disability studying along with normal children, that is inclusive education. ଯେତେବେଳେ special school ପଢ଼ା ଯିବ, that is special school program. Then the next question is, E.G. Williamson was the chief proponent of directive counseling, non-directive counseling, eclectic counseling, and directive and non-directive counseling. Here the correct answer is option A, that is directive counseling. Then next question is, in list 1 the name of the national and international acts declaration are given, and in list 2 year regarding the declaration and acts are given. Match the list 1 with the list in correct order. प्रथम अच्छे कौन ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिजेबल्ड पीपल, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, पीपल विथ डिजेबिलिटी एक्ट, एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट. हियर the correct answer here is option C. Option C is the correct answer. Then the next question is, accreditation of teacher education institution is done by. जो accreditation का जो institution educational institution देता है, किए देता है ना, नाक देता है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. এটা তুমি তো জানিতে নিশ্চয় পড়া হয়েছে, নাক দেইতে হয় accreditation. Then the next question is, which is the proper order of 5E model? এটা জানিছ, engage, explore, explain, evaluate and elaborate and evaluate. Here the correct answer is option B, that is engage, explore, explain, elaborate and evaluate. Then the next question is, which is not a step in icon model of a lesson planning? Observation, contextualization, multiple interpretation and evaluation. Here the correct answer is option D, that is evaluation. Then the next question is, NCF 2005 was framed by NCT, NCERT, UGC and NAC. Here the correct answer is option B, that is NCERT. NCERT द्वारा NCF 2005 डेवलप करा जाइए. Then next question is, Article 45 Constitution of India concerned with option A, free and compulsory education up to class 8, provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years, equal opportunity for scheduled caste and tribes in education. Option D, education for all. Here the correct answer is option B, provision for early childhood care and education. ऑप्शनटा हूँ करेक्ट आंसर हूँ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू क्लास 8. 45 आर्टिकल आमर रही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 years बा क्लास 8 पर्यंत. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वाज लॉन्च ऑन. राष्ट्रीय आरामसा जोटा रही सेकेंडरी एजुकेशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वाज लॉन्च ऑन 9 March 2009, March 2010, March 2011 and March 2012. Here the correct answer is option A, that is March 2009. Then the next question is, Operation Blackboard program was introduced to improve teacher education, primary education, secondary education and higher education. Here the correct answer is option B, that is primary education. Primary education ପାଇଁ Operation Blackboard ही कार्य करिछाए.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाएट स्टैंड्स फॉर पिला माने मु बहुत शॉर्ट फॉर्म मोर शॉर्ट्स रे मध्य अपलोड करछि तो माने सेठु जाई देखि परिबो ए जो शॉर्ट फॉर्म सब परीक्षा रे तो आसुची से गुडी को देखि परिबो डाएट रो फुल फॉर्म होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ लीडरशिप एज पर रेडेंस 3D मॉडल ऑप्शन ए रिलेटेड ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड ऑप्शन सी डेडिकेटेड एंड ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज डेमोक्रेटिक देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉक स्टैंड्स फॉर मॉक होची कोन ना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स तमर कोर 12 एटा पढ़ाई छे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई BCC इज यूज्ड इन द ईमेल in option A allows the recipients to identify other recipients in the group mail address option B allows the sender to conceal the recipients entered in the BCC to identify each other option C allows the sender to get an immediate feedback of the mail and option D allows the recipients to visible each other here the correct answer is option C that is allows the sender to get an immediate feedback of the mail. Then the next question is which is correct about guidance provided to the problematic students only experienced and trained teachers in the guidance process can provide and option C help the students to solve their own problem by themselves and option D guidance is a part of a counseling process here the correct answer is option C that is help the student to solve their own problem by themselves. Then the next question is what is follow up service and guidance here the correct answer is option C that is after guidance contact with students to know how much they are successful. Then the next question is the idea about pedagogy of oppressed was given by option A John Dewey, Montessori, Paulo Freire and Ivan Illich here the correct answer is option C that is Paul Freire. Then the next question is writing difficulties in learning is called as dyslexia, dyscalculia, dysgraphia and dyspraxia here the correct answer is option C that is dysgraphia एथरु सब बेले गोटे क्वेश्चन आसी याकू भल भाव में मन रखिथबार एक्सप्लेनेशन दिया जाउची भल भाव में मन रखिथबो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द फर्स्ट ओपन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑप्शन ए इग्नो ऑप्शन बी डॉक्टर BR आंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑप्शन सी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इग्नो इग्नोर फुल फॉर्म होची इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द सेम एज ए रिसर्च प्रपोजल ऑप्शन ए सिनॉप्सिस ऑप्शन बी थीसिस ऑप्शन सी रिसर्च एंड रिपोर्ट एंड ऑप्शन डी डिजर्टेशन हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज सिनॉप्सिस सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2021 क्वेश्चन डिस्कशन क्वेश्चन विथ आंसर एंड विथ एक्सप्लेनेशन तो मैंने भल भाव देखिले परीक्षा रेडी हो पार।